Good morning students, welcome once again to my class, and this video is for class 6 and today we'll continue the revision of chapter 2 of geography, that is inside our earth. So we'll continue with our topic, the composition of crust, rocks and minerals. So crust, the outermost layer of the earth, the lithosphere on which we are living. So the crust is made up of rocks and minerals. So we'll come to know the composition of rocks and minerals, what it is made up of. So first we'll come to start with the minerals. A mineral is a naturally occurring substance found in the lithosphere. So a mineral is a naturally occurring substance which found in the lithosphere, and minerals have a definite chemical composition. Minerals का एक निश्चित composition होता है and physical properties, which means they are known and studied. Physical features means we cannot physically study and know that which type of mineral is this. Now minerals can be of two types, organic or inorganic. Organic means living, जैविक, and inorganic means non-living or अजैविक, abiotic. So minerals are formed when the dead remains of plants and animals are trapped in the lithosphere and decomposed. जब प्लांट्स या एनिमल्स की जो डेड बॉडी होती है वो ट्रैप्ड हो जाती है, दफन हो जाती है लिथोस्फीयर में, अर्थ के अंदर, और डिकम्पोज हो जाती है, देन इट फॉर्म्स यूजफुल मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. नाउ आवर नेक्स्ट वन टॉपिक इज द रॉक्स. So a rock is made up of one or more than one mineral. So rock is also made up of minerals, but it is made up of one or more than one mineral. तो ये एक या एक ज़्यादा मिनरल से बना हुआ होता है, and because of this reason, because it is made up of more than one minerals, that's why rocks do not have, or rarely they have any डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन. इसलिए बहुत रेयरली ही रॉक्स का कोई डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन होता है. नाउ द लिथोस्फीयर हैज रॉक्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, शेप्स, कलर्स एंड टेक्सचर्स. Lithosphere, the outermost crust of the earth on which we are living, has rocks of different sizes. यहाँ पे जो rocks होती हैं वो अलग अलग साइज की होती हैं, शेप्स की होती हैं, अलग अलग कलर की होती हैं और उनके अलग अलग टेक्सचर होते हैं. नाउ विल कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द टाइप्स ऑफ रॉक्स. सो देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स. द फर्स्ट वन इज द इग्नियस रॉक्स, द सेकेंड वन इज द सेडिमेंट्री रॉक्स, द थर्ड वन इज द मेटामॉर्फिक रॉक्स. सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द इग्नियस रॉक्स. व्हाट आर इग्नियस रॉक्स? The word igneous comes from the Latin word ignis, which means fire. तो जो igneous शब्द है वो कहाँ से आया है? लैटिन के शब्द ignis से आया है, जिसका मीनिंग होता है fire. And the rocks are called igneous rocks because they were formed by cooling of molten magma. And the rocks are called igneous rocks because these rocks are formed by the cooling of molten मैग्मा. पिघले हुए मैग्मा के कूल डाउन होने के बाद जो रॉक का फॉर्मेशन होता है, दैट इज नोन एज इग्नियस रॉक्स. इग्नियस रॉक्स आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स बिकॉज दीज आर द रॉक्स विच आर फॉर्म्ड फर्स्ट, क्योंकि ये वो रॉक्स होती हैं जो सबसे पहले बनती हैं. एंड द अदर टू टाइप्स ऑफ रॉक्स, दैट आर सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, आर फॉर्म्ड फ्रॉम द इग्नियस रॉक्स. और बाकी जो दो टाइप की रॉक होती हैं, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, वो इग्नियस रॉक से बनी होती हैं. दैट्स व्हाई इग्नियस रॉक्स इज नोन एज प्राइमरी रॉक्स ऑल्सो.
Now types of igneous rocks. So there are two types of igneous rocks. The first one is intrusive igneous rocks and the next one is extrusive igneous rocks. The first one is intrusive igneous rocks. The cooling of these rocks is slow. The cooling of these rocks is slow, as I've told you. The formation of igneous rocks is by cooling of molten magma. So here is the process of cooling is slow because the cooling takes place below the surface of the earth. Cooling process is slow because the cooling process takes place below the surface of the earth. And example of this type of rocks are granite, gabbro, diorite, etc. Now next one is the extrusive igneous rocks. So the cooling of these rocks is very rapid. The cooling of this type of rocks is very rapid. बहुत तेजी से ठंडे हो जाते हैं जो molten magma होते हैं. Because the cooling takes place on the surface of the earth. Because the cooling process of this extrusive igneous rocks are on the surface of the earth. And example of this type of rocks are extrusive igneous rocks are obsidian, basalt, andesite, etc. Now the characteristics of igneous rocks. So igneous rocks are hard and compact, and these rocks are not occur in form of layers, and igneous rocks do not have fossil fuels, and other two types of sedimentary and metamorphic rocks are formed from the igneous rocks. Now our next one topic is the sedimentary rocks. So the word sedimentary comes from the Latin word sedimentum, which means to settle down. So the word sedimentary comes from the Latin word sedimentum, जिसका मतलब होता है settle down. Rain, wind, ice, plants and animals break rocks into sediments. तो बारिश की वजह से, विंड की वजह से, आइस की वजह से, प्लांट्स और एनिमल्स की वजह से रॉक्स जो होते हैं, बड़े बड़े चट्टानें होती हैं, वो छोटे छोटे सेडिमेंट्स में पार्ट्स में टूट जाती हैं. एंड दीज सेडिमेंट्स आर कैरीड अवे बाय रनिंग वाटर, विंड एंड आइस and are deposited in depressions. Such layered rocks are called sedimentary rocks. Means these rocks are formed by the deposition of sediments. That's why these rocks are called sedimentary rocks. And these rocks are the secondary rocks. These rocks are soft and porous. As they are usually formed underwater, they have wave-like pattern. तो उसमें वेव लाइक पैटर्न्स बने हुए थे. मड क्रैक्स ऑन द सर्फेस. मैनी एनिमल एंड प्लांट रिमेन्स वर ट्रैप्ड इन बिटवीन दीज लेयर्स. हैंस दे आर गुड सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस. Sandstone, salt, iron or limestone are some examples of sedimentary rocks. Characteristics of sedimentary rocks. There are over 700 types of igneous rocks. Tuff is a rock formed from volcanic ash, and the upper section of the earth's crust comprise around 95% of igneous rocks. Now metamorphic rocks. The third type of rock is metamorphic rock. The word metamorphic comes from the Greek word metamorphose, which means change of form. तो metamorphose जो metamorphic वर्ड है, ये मेटामॉर्फोस वर्ड से आया है, जो कि ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब ही होता है चेंज ऑफ फॉर्म. तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना. सम रॉक्स विद इन लिथोस्फीयर एक्सपीरियंस सम चेंजेस. कुछ रॉक्स होती हैं लिथोस्फीयर पे प्रेजेंट होती हैं जो वो चेंज होती रहती हैं, उसमें कुछ चेंजेस होते रहते हैं बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. एंड दीज रॉक्स आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स, which are formed because of changes in sedimentary and igneous rocks. तो वो rocks जिसमें कुछ igneous और sedimentary में changes होने के बाद वो convert हो जाती हैं metamorphic rocks में. So they can be formed from either igneous or sedimentary rocks.
The minerals present in these igneous and sedimentary rocks also change their composition under extreme pressure and temperature. और इसमें changes क्यों होते हैं igneous और sedimentary में? बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से, बहुत एक्सट्रीम प्रेशर या एक्सट्रीम टेम्परेचर होने की वजह से जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज होती हैं तो कौन सी रॉक बनती है? मेटामॉर्फिक रॉक. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक. मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेड अप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स. They are very hard. Metamorphic rocks are very hard and have a high specific gravity. These rocks after changes remain in their original position. ऐसा नहीं कि change होने के बाद वो अपना place change कर देती हैं. They remain in their original position after changes also. So these rocks are not porous or they do not have space between them. मतलब इसमें खोखली नहीं होती हैं, अंदर इसमें space नहीं होता है. इम्पॉर्टेंस ऑफ रॉक्स. रॉक्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या ज़रूरत होती है? सो रॉक्स आर कंपोज्ड ऑफ वेरियस मिनरल्स एंड दीज मिनरल्स आर लाइक कॉपर, बॉक्साइट, आयरन एंड दीज मिनरल्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़. ये सारे जो मिनरल्स होते हैं इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं एज रॉ मटेरियल. एंड रॉक्स आर सोर्स ऑफ प्रेशियस स्टोन्स एंड जेम्स ऑल्सो. एंड दीज जेम्स एंड प्रेशियस स्टोन्स like diamond, metal like gold and silver are used to make jewelry, and fossil fuels like coal and petroleum are used for a source of energy, and soil is made from rocks and the process is called weathering. And many chemical and physical processes break the rocks into tiny pieces, and these small pieces eventually turn into fine particles and hence soil is formed. तो मिट्टी भी कहाँ से बनती है? रॉक से बनती है. जब रॉक्स छोटे छोटे पार्ट्स में, पीसेस में टूट जाता है केमिकल या फिज़िकल प्रोसेस के थ्रू, तो वो क्या बन जाता है? सॉयल, जिसमें हम खेती करते हैं, पौधे उगाते हैं. द सॉयल इज़ टर्न इनटू ब्रिक्स एंड यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन. और बाद में सॉयल का और भी यूज़ होता है, जैसे कि उसको हम ब्रिक्स बनाते हैं और उसे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं, हाउसेस and bridges. Now the next one topic is rock cycle. The igneous rocks which are the primary rocks. तो igneous rocks primary rocks क्यों होती हैं? क्योंकि वो सबसे पहले बनती हैं. मॉल्टन मैग्मा के कूल डाउन हो जाने पे सबसे पहली जो रॉक बनती है वो क्या बनती है? igneous rocks. और बाकी दोनों जो रॉक्स होती हैं वो igneous rocks से ही बनती हैं, sedimentary और metamorphic. So the igneous rocks are exposed to weather and are broken or eroded and deposited to other places, and sedimentary rocks are formed. And these sedimentary rocks experience high pressure and temperature and turn into metamorphic rocks. So when these metamorphic rocks are trapped deep below Earth's surface, they are turned into magma. और बाद में यही metamorphic rocks जो हैं ये फिर से जब अर्थ के अंदर ट्रैप हो जाती हैं, दफन हो जाती हैं, तो फिर से ये हाई टेम्परेचर की वजह से मॉल्टन फॉर्म में हो जाती हैं, पिघल जाती हैं, टर्न इनटू मैग्मा. दिस मैग्मा कम्स आउट फ्रॉम इनसाइड द अर्थ एंड फिर से ये मैग्मा बाहर आता है प्रेशर के थ्रू, और फिर से इससे क्या बनता है? इग्नियस रॉक्स. एंड दिस फॉर्म्स अ साइकिल, और ये एक साइकिल के तरीके काम करता है, कॉल्ड रॉक साइकिल. इन दिस साइकिल देयर इज़ नो स्टार्टिंग पॉइंट, नो एंडिंग पॉइंट. तो हम इसमें कोई स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट नहीं कि पहले मेटामॉर्फिक अर्थ के कन्वर्ट हुआ इग्नियस में, फिर इग्नियस सेडिमेंट्री, तो ये इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है. इट इज़ एन एंडलेस साइकिल इन विच द सन प्लेज द इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक्स. Now here we finished our chapter. Read the chapter properly and give your attendance in the comment section. Thank you class.